Okay, so hi everyone. Thank you for watching day 1 video and let's start the day 2. So myself Pius, I'm your AI master trainer and today we're going to learn something very new and very foundational things about AI. So today's topic is AI foundation and core concepts where today we're going to learn define LLMs about LLMs and generative AI and how AI thinks and also we categorize the tool stack कि टेक्स्ट के लिए कौन सा टूल बेस्ट है इमेज के लिए कौन सा बेस्ट है वर्कफ्लो एंड ऑल के लिए क्या बेस्ट है सो लेट्स बिगिन सो आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन में है व्हाट इज जनरेटिव एआई राइट सो एआई इजंट मैजिक इज मैथ्स ओके इफ यू आर engineering student you will know about it कि to make a AI there's lots of statistics and probabilities behind it neural network जो हम लोग पाइथन टेंसर फ्लो राइट उससे हम लोग बनाते हैं राइट सो आई एम नॉट गोइंग टू डीपर अबाउट हाउ ए आई मेड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ए आई इज़ नॉट अ मैजिक बट इट्स अ मैथ ओके और ये ऐसा नहीं कि अभी अभी आए इट्स बीन फ्रॉम लाइक लास्ट यू नो 30 to 40 years तब से लोग प्रेडिक्ट करके रखे थे कि कुछ ऐसा आने वाला है राइट सो बेसिकली ट्रेडिशनल सर्च इंजिन लाइक गूगल वो लोग क्या करते हैं इट्स अ वेरी इजी थिंग कि लाइक हम लोग वहाँ पे कुछ सर्च किए लाइक टॉयज़ देन इट विल गिव अस द रिजल्ट्स ऑफ टॉयज़ बट इन द लिंक सेक्शन कि कोई वेबसाइट पे जाओ फिर अपना टॉयज़ ढूंढो अमेजॉन फ्लिपकार्ट या कोई भी नॉर्मल वेबसाइट पे जाके यू कैन बाय और यू कैन कॉन्टेक्ट द ओनर्स और यू नो समथिंग लाइक दैट बट generative AI models create net new information based on patterns तो it actually take patterns okay हर एक डाटा को लेके it will take a pattern कि ये टॉय मेरे घर के सामने कौन से दुकान में सबसे अच्छे से मिलेगा then it will just take whole data कि उस आपका पास वाले दुकान का रेटिंग कैसा है उस पर क्या है तो हर चीज़ को पैटर्न को समझ के it will give you a result like you talking to a human so it actually work like a human okay it actually give you replies like a human right तो उसके पीछे एक मॉडल छुपा है which is called large language model also known as LLM right तो right अभी एक famous LLM which is of OpenAI ChatGPT, right, which is generative AI, Gemini, Claude, which is very famous nowadays, right? तो ये सब के पीछे अपना LLM है, which contain millions of datas over the world. हर एक चीज़ का डाटा है उसके पास, okay? So that's how a generative AI works. और उसके पीछे क्या है इट्स ऑल अबाउट यू नो LLMs हाउ AI एक्चुअली थिंक्स राइट तो इट एक्चुअली थिंक्स लाइक अ टोकेन्स नॉट वर्ड्स राइट सो टोकेन्स पे ही हम लोग ये बात करते हैं तो अगर आप कभी चैट जीपीटी जेमिनी या कुछ सब लोग देखते हो राइट यूज़ करते हो देन वो लोग बोलते हैं लिमिट ख़त्म हो गया सो इट्स बेसिकली आपको वो लोग एक स्पेसिफिक टोकन्स दे के रखते हैं कि 1 million टोकन ही आपको पर डे यू नो लिमिट रखते हैं एक थ्रेश होल्ड रखते हैं कि उससे पार हो गया देन यू विल लाइक अलर्ट बाय अ मैसेज कॉल यू नो limit exceeds or something like that so it's all about tokens and context windows दिस इज़ द AI शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ होता है उतना मेमोरी स्टोर होता है देन इट विल जैसे कि अभी हम लोग किससे बात कर रहे हैं देन वी कैन रिमेंबर द yesterday you know topics
two 2 days ago's topics also. So like that, the context windows are very important. It's a short term memory. Okay. The processing engine, it's like input. Okay, there are many hidden layers between input and output. The prompt, the thing we call prompt, we're gonna learn in the future classes ki what is prompt engineering, right? Hidden layers, the and also the output, the generation. Okay, it actually statistically probable result. It actually take learn the pattern, learn the answer, the output, it match the output and give you the perfect output. Sometimes it can messed up, but at the end it actually give you a perfect, not so perfect but close to perfect results. Okay, so right now there are main types of AI tools, which is text generator tools like ChatGPT, Claude, Gemini, used for writing, coding, brainstorming, and structuring data. Image generators tools like Midjourney, Dali, Stable Diffusion, used for branding, ad creatives, and assets generation. Workflow agents like Zapier AI, custom GPTs, okay, which is used to make automation tools for businesses, or like without human input, जो कि we will जो कि हम सीखेंगे in the future classes also. And real results, the content engine. Okay, बिफोर AI, अगर एक क्रिएटर को एक कोड लिखने के लिए it takes like 4 hours to 5 hours. Now LLM can do anything in 2 minutes to 5 minutes or under 10 minutes. All you have to give a proper prompt, जो कि in future classes में we're gonna learn about the prompt engineering अच्छे से. Okay, so working with AI, not against it. Nowadays many people tell that AI gonna lose the job, but AI is a very powerful thing which actually upgrade you in the future. Okay, so what's to about like avoid treating AI like Google. Don't just do something like how to write a sales email. Okay, you can actually give AI to write a sales email, right? Accepting the first draft. AI tends to write politely, generically, and with a lot of filler words. Okay, so it's a very good one. You can tell your AI how to behave with you also, so you can train the LLM by yourself for your own. So we're gonna do that also. So today's quick win. In your After watching this video, do open your free ChatGPT, Claude, or Gemini account. Enter this exact prompt. Explain how generative AI works to a 5 years old using an analogy about baking a cake. Okay, so just do that and AI will generate a very good result for 5 year old using an analogy about baking a cake. So, and also take a screenshot and you know give the screenshot to the assignment portal you will find in the dashboard. Key takeaways: AI is a prediction engine, mathematically determining the best next output based on your input. The more good input you're gonna give, the more good prompt you're gonna give, the more close to perfect results you're gonna get. Okay, तो हम लोग सीखेंगे what is prompt engineering, what is context engineering. Okay, in further classes. And just go watch the whole video, and thank you are watching the video till the end. And hooray, you just claim your 30 credits. Thank you so much. And you will go get these questions in below quiz, in the section of quiz sections. So please do all the quizzes and assignments, so it will be very good. Yeah, so see you in the next class. Thank you.